It is said the court has assumed the role of governor and speaker. कैसे? अब ये comment आ गया. That means you have to analyze the statement. How? So through various decisions, though judiciary is not looking into the merits of appointment and dismissal of the chief minister, it is the discretion. But how that discretion is exercised is subject to judicial review. And that is where they have found, wherever they have found that it is not a judicious exercise of discretion by the governor in appointment of chief minister, they have intervened. And since the cases are many, that is why there is an impression that role of governor has been taken over by the court. But that is not so. So, floor test. Now, why they say report to the court? Because it is basically the job of the governor to do this. When he fails to do that, court intervenes. Because that is the most fair method of proving the majority, the confidence of the house. That is the floor test. हाँ, आपको बताओ, मेरे से पूछो यार, मैं किस लिए खड़ा हूँ यहाँ पे? बिल्कुल, तो हम यार, you are welcome. Why you are shying from that? देखिए, you know what is like Lok Sabha, then you have state legislature. देखो, यहाँ पे बैठता स्पीकर, ये दोनों एक जैसे समझो, ठीक? ये स्पीकर हो गया या जो भी हेड है आपका, यहाँ पे बैठता है प्राइम मिनिस्टर या सीएम, अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर है तो सीएम. हाफ में मार्क यहाँ होगा ना, तो इससे ऊपर इनके मेंबर्स होंगे तभी तो गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक? इस तरफ हो गया आपका ऑपोजिशन. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द मेजोरिटी? दिस कट ऑफ पॉइंट. अगर इसके ऊपर जाएगा तभी इसको कॉन्फिडेंस मिलेगा ना. इस तरफ आ गया तो ही विल लूज कॉन्फिडेंस. दैट मीन्स ऑपोजिशन भारी पड़ गया इन पे, ठीक? नाउ दिस इज डन, दिस कॉल्ड द फ्लोर ऑफ द, ये फ्लोर तो वैसे ये होता है, लेकिन इनके सामने जो हो रहा है वो उसको फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं. इसको वेल कहते हैं जो बीच में होता है, जिसमें कहते हैं ना वेल में आके पेपर फाड़ दिए, वो कर दिया. नाउ दिस इज द फ्लोर जहां पे लोग बैठे हुए हैं. एक तरह से पंचायत है, वो तो सीटों पे बैठते हैं, पंच बेचारे तो चारपाई पे नीचे बैठते थे, वही डिसाइड करते थे ना कि इसको क्या करना है. तो जिसके हाथ जितने ज्यादा खड़े हो गए उसके हक में फैसला हो गया. तो यहाँ पे ये टेस्ट होता है, वोट डलता है. अगर मान लो इसको अपनी कुर्सी बचानी है या अपना मेजोरिटी प्रूव करनी है तो क्या करेगा? ही विल मूव ए मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट मोशन विल से दिस हाउस हैज कॉन्फिडेंस इन मी एंड माय गवर्नमेंट इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? नाउ दिस इज पुट टू वोटिंग, this motion. Suppose opposition has a upper hand, यहां आ जाते हैं इस लाइन के इस तरफ. That means house doesn't have confidence in me, I have to resign. Suppose this motion is moved by opposition कि we have no confidence in this man and government led by him. That is put to voting. Suppose opposition crosses this, that means this fellow goes. This is called floor test. You test whether
he has the confidence of the house or not, that is majority. और वोटिंग कैसे होती है ये भी समझ लो. There are two words which are used. Can anybody tell me that? What is yes called and what is no called? Eyes. Nose. तो वह स्पीकर साहब क्या बोलते हैं? द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द आईज. 3 बार बोलते हैं. 3 बार इसलिए बोलता है कि हो सकता है एक बार गलती से बोल दिए. इन सब का मतलब होता है. इसीलिए मैं आपको ये कहता हूं, whenever you see anything, any term, सिंपल सा सिंपल भी है, पूछो why. अपने आप से पूछो why.